आज सीखते हैं preposition of time के बारे में। Prepositions of time और prepositions of place काफ़ी सिमिलर है, लेकिन जहाँ हम टाइम डिनोट करने के लिए prepositions यूज़ करते हैं तो वो prepositions of time बन जाते हैं, और जहाँ place डिनोट करने के लिए हम prepositions यूज़ करते हैं वो preposition of place बन जाते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। In used for years, months, seasons, morning, afternoon, evening or period of time. For example, I went backpacking in 1998. I went for a run in the morning. This is my first chocolate in the last 3 years. On used for days or period. For example, I met her on Monday. At night or exact time of the day. The moon shines at night. We go to the beach at 5:30 in the morning to see the sunrise. By at or before, not after. He will be back by 7 p.m. Since range of time. We haven't visited this house since the last summer. Ago. Back in time with reference to the present. Dodo birds were extinct 5 centuries ago. Till or until. Up to the mentioned time. Last year it rained till December. From the beginning time of something specific. It has been raining money from last 2 years. To tell the exact time, used to denote before a time while giving a period. It's 9:45 या फिर we play tennis from 6 p.m. to 7 p.m. every day. Past used while telling the time. It is 2:30. Before, a time earlier than. I reach before 9 p.m. every day at the bus stop. For a certain amount of time. We have been living here for a long time now. ये थे हमारे prepositions of time. इन्हें आप sentences में यूज़ कीजिए और each preposition के साथ एक sentence बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप सफल हो रहे हैं तो आप prepositions of time में master बन चुके हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ये prepositions यूज़ करके conversation भी कर सकते हैं। सिंपल था ना? ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीकों से इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।